edition of the Mahabharata, the first part. Let us begin. One of the most ambitious projects of scholarship began in 1919 under the leadership of a noted Indian Sanskritist V.S. Sithankar. A team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of the Mahabharata. Please remember V.S. Sithankar, an Indian Sanskritist from 1919. And a group of scholars started the critical edition of the Mahabharata. What is this? What exactly is the critical edition? Initially, it meant collecting Sanskrit manuscripts of the text written in a variety of scripts from different parts of the country. The team worked out a method of comparing verses from each manuscript. Ultimately, they selected the verses that appeared common to most versions and published these in several volumes running into over 13,000 pages. The project took 47 years to complete. Two things became apparent. There were several common elements in the Sanskrit versions of the story evident in manuscripts found all over the subcontinent, from Kashmir and Nepal in the north to Kerala and Tamil Nadu in the south. Also evident were enormous regional variations in the ways in which the text had been transmitted over the centuries. These variations were documented in footnotes and appendices to the main text. Taken together, more than half the 13,000 pages are devoted to these variations. देखिए, बहुत ज़रूरी है समझना. What did the team do was, उन्होंने पूरे सबकॉन्टिनेंट में, फ्रॉम नेपाल, कश्मीर, केरला, तमिलनाडु, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे सब कॉन्टिनेंट में जितने संस्कृत वर्जन्स ऑफ महाभारत पर अवेलेबल, उन्होंने सब चीज़ों को एक टुगेदर एक साथ लाए एंड दे कंपेयर्ड ईच वर्जन. जिस वर्जन में जितने कॉमन एलिमेंट्स मिले उन्होंने तो उसको नोट कर लिया. फिर साथ साथ जितने रीजनल वेरिएशंस मिले, देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्टोरी डॉट टू डॉट सेम होगी, हर जगह की अपनी अलग वेरिएशन हो जाती है. ओवर दी सेंचुरीज स्टोरीज चेंज हो जाती है, जनरेशन टू जनरेशन पास होने में हर जगह की विद टाइम एवरी स्टोरी हैज़ समथिंग डिफरेंट टू इट. तो उन्होंने क्या किया, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स थे उसको तो ग्रुप करके उन्होंने रख दिया. देखो ये यू कैन सी दिस वन पेज, ठीक है. जैसे यहाँ पर दिस पार्ट इज़ द कॉमन एलिमेंट जो हर उसमें कॉमन मिला. जितने रीजनल वेरिएशंस मिले उन वेरिएशंस को उन्होंने इस तरीके से उसी के नीचे लिस्ट कर दिया कि इसी वर्स के लिए उसका रीजनल वेरिएशन, कौन से रीजन का क्या वेरिएशन है. सो दिस इज़ हाउ दे पुट टुगेदर द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत. In a sense, these variations are reflective of the complex processes that shaped early and later social histories through dialogues between dominant traditions and the resilient local ideas and practices. These dialogues are characterized by moments of conflict as well as consensus. देखिए, Mahabharata as an epic has a great impact on India. The people, एवरीथिंग, लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इट हैज़ एन इम्पैक्ट. सोशल हिस्ट्री क्रिएट करने में इट हैज़ एन इम्पैक्ट, क्योंकि महाभारत के इंस्टेंसेस को लोग अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं. सो महाभारत इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपिक एंड ये इसने बहुत काम किया है, मतलब लोगों की थिंकिंग को शेप करने में. आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस इज derived primarily from texts written in Sanskrit by and for Brahmanas. When issues of social history were explored for the first time by historians in the 19th and 20th centuries, they tended to take these texts at face value, believing that everything that was laid down in these texts was actually practiced. सबसे पहले जब हमने इनको स्टडी करना शुरू किया, what they believe was कि जो कुछ लिखा it's true, टोटली ट्रू, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जस्ट एट फेस वैल्यू उन्होंने लेना शुरू कर दिया. Subsequently, scholars began studying other traditions from works in Pali, Prakrit and Tamil. These studies indicated that the ideas contained in normative Sanskrit texts were on the whole recognized as authoritative. They were also questioned and occasionally even rejected. It is important to keep this in mind as we examine how historians reconstruct social histories. तो देखिए, जितने भी संस्कृत टेक्स्ट है, जैसे कि धर्मसूत्रास, मनुस्मृति, द वेदास, ऑल दी संस्कृत टेक्स्ट जो है उनको सबसे पहले फेस वैल्यू पे लिया जाता था कि वट एवर इज़ रिटन इट वॉज स्ट्रिक्टली वैल्यूड, इट इज़ ऑल राइट, ये बिल्कुल सही है. धीरे धीरे करके जब हिस्टोरियंस ने अदर टेक्स्ट पढ़े, जैसे तमिल संगम टेक्स्ट या पाली में या प्राकृत लैंग्वेज में अदर टेक्स्ट पढ़े, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े, जैना टेक्स्ट पढ़े, देन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये जो संस्कृत टेक्स्ट है ये अथॉरिटेटिव थे.
ये आपको बताते थे कि यार जो ब्राह्मण्स है वो टॉप टियर ऑफ सोसाइटी फॉर्म करते हैं, जो शूद्रास है, जो चांडाल्स हैं, दे आर द लोवेस्ट टियर, दे आर डर्टी पीपल, वो अच्छे नहीं है, दे डोंट बिलोंग टू द इक्वल पोजिशन इन द सोसाइटी। तो ये बाद में हमें रियलाइज़ होना है कि हर संस्कृत टेक्स्ट में उनकी खुद की निटिग्रिटीज़ थी, एंड हमें ये भी रियलाइज़ हुआ कि इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टेक्स्ट वर जस्ट फॉलोड एज दे वर, ओकेजनली उनको रिजेक्ट भी किया जाता था। एंड ये चीज़ हम पढ़ेंगे इन भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, आपका थीम 6 जो है उसमें बहुत क्लियरली ये मेंशन्ड है कि कैसे अल्वर्स एंड नयनाज एंड द बुद्धिस्ट एंड द, इनफैक्ट इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में जिसमें हम बुद्धिज़्म के ऊपर लाइट थ्रो करते हैं उसमें भी हम पढ़ते हैं कि हाउ दीज संस्कृत टेक्स्ट वर डिनाइड एंड नॉट फॉलोड बाय एवरीवन। ठीक है, दिस फिगर अ सेक्शन ऑफ अ पेज फ्रॉम द क्रिटिकल एडिशन, द सेक्शन प्रिंटेड इन लार्ज बोल्ड लेटर्स इज द पार्ट ऑफ द मेन टेक्स्ट, द स्मॉलर प्रिंट लिस्ट वेरिएशंस इन डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स व्हिच वर केयरफुली कैटलॉग्ड। तो ये जितने भी कॉमन एलिमेंट्स जो मेन टेक्स्ट है ये यहाँ पर है, जितने भी वेरिएशंस जो एडिशंस मतलब जो वेरिएशंस हर मैन्युस्क्रिप्ट में अलग पाए गए तो उन सभी वेरिएशंस को यहाँ पर इस तरीके से नोट कर लिया गया। Kinship and marriage, many rules and varied practices. Finding out about families. We often take family life for granted. However, you may have noticed that not all families are identical. They vary in terms of number of members, their relationship with another, as well as all the kinds of activities they share. Often people belonging to the same family share food and other resources and live, work and perform rituals together. Families are usually parts of a larger networks of people defined as relatives, or to use a more technical term, kinfolk. While familial ties are often regarded as natural and based on blood, they are defined in many different ways. For instance, some societies regard cousins as being blood relations where others do not. देखिए फैमिली जो है वो हमें एक जनरल नोशन फैमिली का होता है, लेकिन हर फैमिली जो है वो अलग होती है। जैसे कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती है जिसमें कज़न्स जो होते हैं उनको फैमिली के अंदर इंक्लूड करते हैं, और कुछ सोसाइटीज़ में फैमिली के अंदर उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वो ब्लड रिलेशंस कितना मैटर करता है, इट डिपेंड्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। For early societies, historians can retrieve information about elite families fairly easily. It is, however, far more difficult to reconstruct the familial relationships of ordinary people. Historians also investigate and analyze attitudes towards family and kinship. These are important because they provide an insight into people's thinking. It is likely that some of these ideas would have shaped their actions just as actions may have led to changes in attitudes. तो देखिए हमें रॉयल फैमिलीज़ का तो पता है कि what was their thought about families, किस तरीके से सोचते थे, उनकी फैमिली में किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस थी, हमें थोड़ा बहुत वो चीज़ पता है। बट वॉट वी डोंट नो इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, हाउ दे व्यूड फैमिली, या उनके लाइफ में वॉट वॉज द इम्पोर्टेंस, वो फैमिलीज़ उनके एटीट्यूड को कैसे शेप करती थी और वो एटीट्यूड उनके एक्शंस को कैसे शेप करता था। ओके, सो the terms for family and kin. Sanskrit texts use the term kula. It's a term kula to designate families, and gnati for the jnati for the larger network of kinfolk. The term vamsha is used for lineage. Vamsha मतलब वंश हम बोलते हैं ना, तो वंश is the term for lineage. आप किस वंश से हो, किस lineage से हो, and kula to designate families. कुल I mean किस कुल को बिलोंग करते हो, मतलब किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ज्ञाति मतलब लार्जर नेटवर्क, आपके रिलेटिव्स वगैरह भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। मैट्रिलिनी इज अ टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड टू द मदर। ओके, सो पैट्रिलिनी मतलब फादर, सन, ग्रैंडसन, एंड मैट्रिलिनी मतलब मदर, उनकी डॉटर एंड सो ऑन। Can we identify points when kinship relations changed? At one level, the Mahabharata is a story about this. It describes a feud over land and power between two groups of cousins, the Kauravas and the Pandavas, who belonged to a single ruling family, that of the Kurus, a lineage dominating one of the Janapads. Ultimately, the conflict ended in a battle in which the Pandavas emerged victorious. After that, patrilineal succession was proclaimed. While patrilineal had existed prior to the composition of the epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. Under patrilineal, sons could claim the resources, including the throne in the case of kings, of their fathers when the latter died. तो हमें महाभारत के बारे में सब पता है कि पांडवास and the Kauravas, they were, the cousins. They belong to the same lineage, to the same ruling family, that of the Kurus. Okay?
कुरुस के वो डिसेंडेंट्स थे, एंड दे यूज टू रूल टू वन ऑफ द जनपद्स, ओके, एंड जनपद्स को रूल करते थे. एंड देन देयर वाज अ वॉर बिटवीन द पांडवास एंड द कौरवास, महाभारत, एंड उसके बाद पांडवास emerged victorious, the Kauravas were defeated, and the Pandavas then resumed their control. And what happened was they resumed the Patrilineal, that means जो पांडवास है उनके son throne लेंगे, फिर उनके son, okay, so इस तरीके से, and when like the father would die, the son would take the throne. So it was a patrilineal one. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पैट्रिलिनी फॉलो तो होती थी, बट दिस आइडिया, मतलब ये जो चीज़ हमें इस एपिक में देखने को मिलती है, दैट हैज़ रीइंफोर्स द आइडिया. उसने इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट बना दिया कि अगर आप मतलब अगर थ्रोन कोई लेगा तो वो इट वुड बी थ्रू पैट्रिलिनियल सक्सेशन ओनली. सो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि महाभारत इज़ नॉट जस्ट अ टेक्स्ट, नॉट जस्ट एन एपिक. इसने हमारे आइडियाज़ को शेप करने में हेल्प किया है, हमारी सोसाइटीज़ को शेप किया है. इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन द थिंकिंग, ऑन द एटीट्यूड ऑफ पीपल. Most ruling dynasties circa 6th century BCE onwards claimed to follow this system of patrilineal succession, and it had something to do with Mahabharata. Although there were variations in practice, sometimes there were no sons in some situations, brothers succeeded one another, sometimes other kinsmen claimed the throne, and in very exceptional circumstances, women such as Prabhavati Gupta exercised power. The concern with patrilineal was not unique to ruling families. It is evident in mantras and ritual texts such as the Rig Veda. It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claimed high status, including Brahmins. यहाँ पर ये क्विकली मैप देते थे. द कुरु पंचाल रीजन एंड नेबरिंग एरियाज. ये कुरु और पंचाला का जो रीजन है, ओके, दीज वर दी महाजनपदा रीजन जहाँ पर कुरुज का रूल था. ये देखिए, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, साक्या, मल्ला, कौशला, वत्स, दीज आर कौशंबी. ये थोड़ा सा कुरु वाला एरिया, ये सब वही एरिया है जहाँ पर कुरुज का रूल था. प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, देखिए ये एक सोर्स है, बताता है हमें. It is an excerpt from the mantra from Rig Veda, which is probably inserted in the text circa 1000 BCE to be chanted by the priest while conducting the marriage ritual. ठीक है, आज भी ये हिंदू वेडिंग्स में यूज होता है. And what was this text which was added? Let's read it. I free her from here but not from there. I have bound her firmly there so that through the grace of Indra she will have fine sons and be fortunate in her husband's love. इसका मतलब क्या है? This line is being said by the bride's father. So the bride's father is saying कि मैं उसको यहाँ से फ्री करता हूँ, मतलब अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉटर ऑफ द फैमिली से उसको रिलीव करके उसको मैं आई एम सेंडिंग हर टू अनदर हाउस जहाँ पर वो अपनी ड्यूटीज एज द डॉटर इन लॉ एंड एज द वाइफ वो रिज्यूम करेगी. ओके और वहाँ पर आई हैव बाउंड हर देयर, मतलब वहाँ पर इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर हाउस देयर, एंड इंद्र की ग्रेस से, मतलब बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ इंद्र शी विल प्रोड्यूस फाइन सन्स. Please notice, not daughters, fine sons, and she will be fortunate that if she will be fortunate, she will receive her husband's love. So आप देख सकते हैं कि of course this view is from a male's perspective. Women से ज़्यादा यहाँ पर males को weightage दिया. It's very clear. Husband and the father and son. It's everything about कि daughter की duty है. It's the girl's duties to serve. पहले वो अपने फादर एंड उस फैमिली को सर्व करी थी. नाउ शी हैज़ टू सर्व हर इन लॉज. इंद्रा वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल डीटीज, अ गॉड ऑफ वैलर, वॉरफेयर एंड रेन. हियर एंड देयर रेफर टू द फादर्स एंड हस्बैंड्स हाउस रिस्पेक्टिवली. In the context of the mantra, discuss the implications of marriage from the point of view of the bride and groom. Are the implications identical or are there differences? This is very, you can do it. कि bride and groom कैसे, वो perspective bride and groom से कैसा है कि bride को has to resume her responsibilities there, and groom has to love the wife, and it's his responsibility to take care of the wife, and the wife को fine sons produce करना है, and all that. Why kinfolk quarreled? This is an excerpt from the Adi Parvan. Adi Parvan means the first section of the Sanskrit Mahabharata describing why conflicts arose amongst the Kauravas and Pandavas. The Kauravas were the sons of Dhritarashtra and the Pandavas were their cousins. Since Dhritarashtra was blind, his younger brother Pandu ascended the throne of Hastinapur. However, after the premature death of Pandu, Dhritarashtra became king as the royal princes were still very young.
As the princes grew up together, the citizens of Hastinapur began to express their preference for the Pandavas, for they were more capable and virtuous than the Kauravas. This made Duryodhan, the eldest of the Kauravas, jealous. He approached his father and said, "You yourself did not receive the throne, although it fell to you because of your defect. If the Pandava receives the patrimony from Pandu, his son will surely inherit it in turn, and so will his son, and his. We ourselves, with our sons, shall be excluded from the royal succession and become of slight regard in the eyes of the world, lord of the earth." तो यहाँ पर ये रीज़न बता रहा है, धृतराष्ट्र जो थे वो कौरवास के फादर थे, बट धृतराष्ट्र हैड अ डिफेक्ट, ही वाज ब्लाइंड. तो धृतराष्ट्र के जो ब्रदर थे पांडु, उन्होंने थ्रोन लिया. देखिए जाना चाहिए था थ्रोन धृतराष्ट्र के पास, बट बिकॉज ही वाज ब्लाइंड, पांडु वाज द वन हु बिकेम द किंग. लेकिन पांडु की डेथ जल्दी हो गई, प्री मेच्योर डेथ हो गई. सो धृतराष्ट्र देन हैड टू अगेन रिज्यूम द थ्रोन बिकॉज देयर वाज नो चॉइस. द प्रिंस, ऑल द सन्स, द पांडवास, द कौरवास वर वेरी यंग एट दैट टाइम. तो धृतराष्ट्र के मतलब उसको थ्रोन जैसे फेल ऑफ, जैसे उनको मिला जस्ट बिकॉज पांडु वॉज डेड. अगर पांडु की डेथ पहले नहीं होती, सो द थ्रोन वुड बी विथ पांडु. नाउ जब वो दोनों कजिन साथ में बड़े हुए, सो द पीपल ऑफ हस्तिनापुर दे शोड देयर प्रेफरेंस टुवर्ड्स पांडवास, क्योंकि पांडवास वर मोर लाइकेबल. This is what it tells in the text. So Duryodhan was, he did not like the idea कि अगर थ्रोन पांडवास के पास चला गया तो उनकी पूरी फैमिली, द कौरवास एंड देयर सन्स एंड देयर होल लीनिएज विल बी आउट ऑफ द रूलिंग फैमिली. सो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन्स कि ये वॉर हुई, महाभारत हुई, एंड ताकि who would take the next throne. Passages such as these may not have been literally true, but they give us an idea about what those who wrote the text thought. Sometimes, as in this case, they contain conflicting ideas. ये ज़रूरी नहीं है कि whatever is written is true. We don't know that. But it do tell us कि जो जिसने लिखा है, what was their attitude. It is also important. Read the passage and list the different criteria suggested for becoming king. Of these, how important was birth in a particular family? Which of these criteria seem justified? Are there any that strike you as unjust? What are the ways? देखिए, if you are the father, if you are the son, इफ़ यू आर अ ब्रदर, तो थ्रू लीनिएज हेरिडिटरी वो पास होगा. लेकिन ऐसे नहीं, अगर आप केपेबल कितने हो, इफ़ यू हैव एनी डिफेक्ट, यू कैन नॉट रूल प्रॉपरली, तो वो आपके ब्रदर को चले गया, ब्रदर से फिर सन को चले जाएगा. सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिससे आप थ्रोन ले सकते हो. हाउ जस्ट एंड अनजस्ट आर दे, इट इज़ अपॉन यू टू टेल. ओके, दिस इज़ हेरिडिटरी, बाय हेरिडिटरी ये है, बट हाउ जस्ट एंड अनजस्ट, इट इज़ योर थिंकिंग, योर पॉइंट ऑफ व्यू. Rules of marriage. While sons were important for the continuity of the patrilineage, daughters were viewed rather differently within this framework. मतलब बेटों को देखा जाता था कि हमारा वंश को आगे बढ़ाने के लिए, right? They had no claims to the resources of the household. At the same time, marrying them into families outside the kin was considered desirable. This system, called exogamy, literally marrying outside, meant that the lives of young girls and women belonging to families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time and to the right person. This gave rise to the belief that Kanyadan, or the gift of a daughter in marriage, was important religious duty of the father. डॉटर्स को उनके हाउस होल्ड में एक शेयर नहीं दिया जाता था, इतनी उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, इतने उनके पास राइट्स नहीं थे. एंड बेटे जो थे एज सन्स वर मोर डिज़ायरेबल, ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके. क्योंकि जो बेटियां थी उनको आउटसाइड द किन शादी कराई जाती थी, आउटसाइड द फैमिली. ओके, द किन, दैट इज़ नोन एज एंडोगैमी. एक्सोगैमी, एक्सोगैमी मतलब मैरिंग आउटसाइड, एक्सोगैमी मैरिंग आउटसाइड योर किन. ओके, सो डॉटर्स को मतलब उनका रोल ये था कि दे हैव टू बी गुड डॉटर्स, हैव टू बी गुड वाइफ लेटर ऑन, एंड दे हैड टू बी मैरिड एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन. तो इस तरीके से डॉटर्स को उनकी पूरी लाइफ को सेट किया जाता था. दे वर टॉट एवरीथिंग, घर का काम करना, दे वर बहुत सारी चीज़ें थी कि उनको सुंदर होना है, कोई डिफेक्ट नहीं होना है, दे हैव टू बी लाइक दिस. एक आइडियल उनका फॉर्म होता था कि ऐसे बनाए ताकि उनको एक अच्छे घर में उनकी शादी हो सके, एंड फिर वहाँ जाके वो फिर आगे अपनी लीनिएज को वो उस घर में आगे बढ़ा सके. सो इस बिलीफ, कन्यादान के बिलीफ को कि एक डॉटर जो है वो गिफ्ट, कन्या का दान करना, ओके, दिस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फादर. उसकी एक ड्यूटी बन गई कि यार एक कन्या का सही घर में सही समय पर शादी करना ये फादर की ड्यूटी हो गई. With the emergence of new towns, social life became more complex. People from near and far, okay, we have left this. Types of marriages, देखिए, endogamy मतलब within a unit, within kin group, caste or a group living in the same locality.
एंडोगैमी जी थी वो भी फॉलो होती थी उस वक्त, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह, कुछ सोशल ग्रुप्स एंडोगैमी फॉलो करते थे. एक्सोगैमी रिफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट. पॉलीजिनी मीन्स प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग मेनी वाइफ्स, मैन की बहुत सारी वाइफ्स. एंड पॉलीएंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, जैसे इन द केस ऑफ द्रौपदी. द्रौपदी वाज वन वुमन एंड ही हैड 5 husbands, दैट इज पॉलीएंड्री. People from far and near met to buy and sell their products and share ideas in the urban milieu. This may have led to a questioning of earlier beliefs and practices. Faced with this challenge, the Brahmins responded by laying down codes of social behavior in great detail. These were meant to be followed by Brahmins in particular and the rest of society in general. From circa 500 BCE, these norms were compiled in Sanskrit texts known as the Dharma Sutras and Dharma Shastras. The most important of such works, the Manusmriti, was compiled between 200 BC and 200 CE. So the Manusmriti, Dharma Shastra, Dharma Sutras, they laid down कि Brahmins को क्या rules follow करना है, बाकी social categories को क्या rules follow करना है, क्या नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय जो है वो वॉरियर्स थे, वैश्यास को बिजनेस ही करना है, शूद्र को उनको बाकी 3 उसको सर्व ही करना है. सो दीज रूल्स. While the Brahman authors of these texts claim that their point of view had universal validity and what they prescribed had to be obeyed by everybody, it is likely that real social relationships were more complicated. Besides, given the regional diversity within the subcontinent and the difficulties of communication, the influence of Brahmanas was by no means all pervasive. तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण्स ने ये लिख दिया तो it was followed strictly. ऐसा होता नहीं था. फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं अबाउट द मौर्यन, जैसे कि द किंग चंद्रगुप्त. ओके, चंद्रगुप्त के बारे में हमें पता है कि वी आर इट्स स्टिल डिबेटेड उनका ओरिजिन क्या था, whether he was a क्षत्रिय or not, क्योंकि according to the Brahmins, according to the Dharma Shastras and Dharma Sutras, only a क्षत्रिय could become a king. तो we don't really know कि वॉज चंद्रगुप्त रियली किंग. तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हर बार ब्राह्मण्स ने जो ये टेक्स्ट में लिखा इट वॉज फॉलोड बाय एवरीबडी. द गोत्रा ऑफ विमेन. One Brahmanical practice evident from circa 1000 BCE onwards was to classify people, especially Brahmins, in terms of gotras. Each gotra was named after a Vedic seer and all those who belonged to the same gotra were regarded as his descendants. 2 rules about gotra were particularly important. Women were expected to give up their father's gotra and adopt that of their husband on marriage, and members of the same gotra could not marry. गोत्र आज भी हमें पता है इट इज़ फॉलोड. एक वैदिक सियर, एक वैदिक सेज होता था, उनके नाम पर ये गोत्र होते थे और जितने भी जो उस गोत्र को अडॉप्ट करते थे वो उनके उसी वैदिक सेज के डिसेंडेंट्स माने जाते थे. 2 इंपॉर्टेंट रूल्स थे. पहला, जो विमेन होती थी जब तक उनकी शादी नहीं होती थी वो अपने फादर का गोत्र फॉलो करती थी, और जैसे ही उनकी शादी हो जाती थी वो उनको अपने फादर का गोत्र छोड़कर अपने हस्बैंड का गोत्र फॉलो करना पड़ता था. एंड सेकेंड, मेम्बर्स ऑफ द सेम गोत्र कैन नॉट मैरी ईच अदर. Okay, so these were important. What is interesting is that the Dharma Sutras and Dharma Shastras recognized as many as 8 forms of marriage. Of these, the first 4 were considered as good while the remaining were condemned. It is possible that these were practiced by those who did not accept Brahmanical norms. So, according to the text, there were 8 different forms of marriage. जिसमें से first 4 were considered good and the later 4 were considered bad. What were the first? देखो, here are the first, 4th and 5th and 6th forms of marriage. तो इसमें से first and 4th were good, but 5th and 6th were bad. How? देखिए, first form was the gift of a daughter after dressing her in costly clothes and honoring her with present of jewels to a man learned in the Veda whom the father himself invites. So according to the wish of the father, he is marrying the daughter. The 4th is the gift of a daughter by the father after he has addressed the couple with the text, may both of you perform your duties together, and has shown honor to the bridegroom. तो ये again according to the consent of the father. First, जो ये first and 4th है इसमें clearly show कर रहा है कि without the consent of the father the marriage is not good. In the 5th one, when the bridegroom receives a maiden after having given as much wealth as he can afford to his kinsman and to the bride herself according to his own will, and the 6th is the voluntary union of a maiden and her lover which springs from desire. तो ये जो दोनों forms है these were condemned कि जो मतलब second 2 forms में 5th and 6th में you will notice that the consent of the father is not here and the consent of the elders in the family is not here. That means they were condemned. For each of the forms, discuss whether the decisions about the marriage was taken by the bride, bridegroom, father of the bride, father of the bridegroom, any other person. ये आप डिस्कस कर सकते हैं. जैसे पहली वाली में it was decided by the father of the bride. जैसे 6th वाले में it was decided by the bride and the bridegroom, and so on.
One way to find out whether this was commonly followed is to consider the names of men and women, which were sometimes derived from Gotra names. These names are available for powerful ruling lineages such as the Satavahanas, who ruled over parts of western India and the Deccan. 2nd century BC, 2nd to 2nd century CE, the Satavahanas. Several of their inscriptions have been recovered, which allow historians to trace family ties including marriages. देखिए कैसे नेम ऑफ सतवाना रूलर्स, अब ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर अलग देखने को मिलता है. These are the names of several generations of Satavahana rulers recovered from inscriptions. Note the uniform title Raja. Also note the following word which ends in the term Put. A Prakrit word meaning son. The term Gautami Put means son of Gautami. Names like Gautami and Vasithi are feminine forms of Gautam and Vasistha, Vedic seers after whom Gotras were named. Raja Gautami Put Siri Satakani. Raja Vasithi Put Sami Siri Pulamoi. मतलब राजा, गौतमी पुत्र मतलब गौतमी सन, सिरी सतकनी, this is the name उनकी by lineage. How many Gautami puts and how many Vasithi, alternative spelling Vasithi puts are there? तो देखिए Gautami put is 1, 2, 3 and Vasithi put is 1 and 2. Okay. So Gautami and Vasithi are the feminine forms of Gautam and Vashisht, the Vedic sages. हमें पता है इन sages के बारे में. A Satavahana ruler and his wife. This is one of the rare sculptural depictions of a ruler from the wall of a cave donated to Buddhist monks. This sculpture dates to 2nd century BC. Metronymics in the Upanishads. The Brihadaranyaka Upanishad, one of the earliest Upanishads, contains a list of successive generations of teachers and students, many of whom were designated by metronymics. Some of the Satavahana rulers were polygynous, means that is they had more than one wife. An examination of the names of women who had married Satavahana rulers indicates that many of them had names derived from Gotras such as Gautam and Vasistha, their fathers' Gotras. They evidently retained these names instead of adopting names derived from their husbands' Gotras name as they were required to do according to the Brahmanical rules. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, Brahmanical rules were not strictly followed. जैसे Satavahana rulers के केस में the wives of the Satavahana rulers did not give up their father's Gotra. What is also apparent is that some of these women belong to the same Gotra. That means कुछ women same Gotra में शादी कर ली थी, which was again condemned by the Brahmanical text. As is obvious, this ran counter to the ideal of exogamy recommended in the Brahmanical text. In fact, it exemplified an alternative practice, that of endogamy or marriage within the kin group, which was prevalent among several communities in South India. Such marriages among kinfolk such as cousins ensured a close-knit community. It is likely that there were variations in other parts of the subcontinent as well, but as yet it has not been possible to reconstruct specific details. A mother's advice. The Mahabharata describes how when war between the Kauravas and the Pandavas became almost inevitable, Gandhari made one last appeal to her eldest son Duryodhan. What was the appeal? By making peace, you honor your father and me as well as your well-wishers. मतलब Gandhari is requesting Kaurava कि please peace को ensure करो, don't fight, and by that you are honoring your father, me and your well-wishers. It is the wise man in control of his senses who guards his kingdom. Greed and anger drag a man away from his profits. By defeating these two enemies, a king conquers the earth. मतलब लालच को, गुस्से को छोड़ दो, क्योंकि इन दोनों को छोड़ के पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो. You will happily enjoy the earth, my son, along with the wise and heroic Pandavas. There is no good in a war, no law, dharma and profit, earth, let alone happiness, nor is there necessarily victory in the end. Don't set your mind on war. But Duryodhan ने अपनी mother की नहीं सुनी, and of course he fought the war and he was defeated. Does this passage give you an idea about the way in which mothers were viewed in early Indian societies? Yes, that mothers were not really obeyed as fathers. मतलब ऐसा नहीं कि mothers की सुनी नहीं जाती थी, but still. Were mothers important? We have seen that Satavahana rulers were identified through metronymics, name derived from that of the mother and not of the father. Although this may suggest that mothers were important, we need to be cautious before we arrive at any conclusion. In the case of the Satavahanas, we know that succession to the throne was generally patrilineal. मतलब metronymics में नाम वो suggest करते थे, but फिर भी succession patrilineal था. A battle scene. This is among the earliest sculpture depictions of a scene from the Mahabharata, a terracotta sculpture from the walls of a temple in Ahitchhatra, Uttar Pradesh, 5th century CE. ये सारी figures जो है, these are important, please इन्हें ध्यान में रखिए.